Atopahar Smrana Karijavi Jodlavi Surati Nuamaritara Akijavo Sita Satya Gurudev Yarich Deda Modarshana Kirpalya Jayavtani Deda Modarshana Kirpalya Jayavtani Yoladeo Manasade Andare Tariche Kujavo Sika Sache Gurudev. राधा संतोष की वाली नाम पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता नाई वो मरे जो नाम पीवे। This is the Bani of Param Sant Sadguru Paltu Sahib. कहते हो नामामृत जो पीता है वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं. He says that the one who drinks the nectar of Naam, he becomes immortal and he doesn't die. सब संतों ने नाम की महिमा का है. नाम क्या चीज है हमें ये भी जानना जरूरी है. All the saints have sung the greatness of Naam, so it is important for us to know what actually Naam is. क्योंकि बाहरी लोग जो देवताओं के शब्द कर वो निबंध हैं उनको भी नाम ही कह देते हैं, और जो 5 नाम हम जपने के लिए लेते हैं हमारे सत्संगियों में ऐसा होता है कि ये 5 नाम ही नाम है. People call the 7 crore mantras as Naam. There are 7 crore mantras, so people refer those as Naam also. Even among satsangis, when they are initiated, they are given the 5 holy names for repetition. So they also address those 5 holy names as Naam. स्वामी जी महाराज ने अपने वाणी में इशारा दिया है 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ नहीं मांगे, ये अक्षर रह जाएंगे वो अक्षर इनमें ना. कहते 52 अक्षर से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना होती. Even Swamiji Maharaj refers and says that everything is contained in the 52 alphabets and 52 letters, and that all this is subject to destruction. The Naam that is being referred is not part of these 52 letters. क्योंकि ये 52 अक्षर है, लिखने पढ़ने बोलने में जो आता है दिखाई देता है वो अक्षर है, अक्षर नाश पाता है. So whatever we can read and write, that is part of that 52 letters, all that is subject to destruction. और स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि वो अक्षर इनमें नहीं, जो संत नाम देते हैं वो इन अक्षरों में नहीं होता. So Swamiji Maharaj says that Naam, that is not part of these 52 letters. तो हमें शंका हो सकती है
कि जब वो अक्षर ही नहीं है, लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, तो गुरु कैसे देता है? So the doubt that arises in our mind is that if it is not part of these 52 letters, then how does the master tell us that? कहते हैं 5 नाम, ये भी अक्षरात्मक है, ये भी नाश होता है, लेकिन जब हमें 5 नाम के सुब्रत ज्ञान में गुरु बिठाते हैं, उस समय अंदर जाके हमारे दोनों आंखों के बीच में आत्मा भी है, शब्द भी है, और हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं, और वही नाम दान होता है। The 5 holy names that are given for repetition at the time of initiation, these are also aksharatmak, or these are also part of the 52 letters, and they are also subject to destruction. But at the time of initiation, the master connects the soul at the eye center to the holy sound current. कहते हैं जो शब्द से हमारी आत्मा को जोड़ते हैं, उसी को संत नाम दान करते हैं, वो शब्द ही सच्चा नाम है। So that process where the master ties the soul to that holy sound current at the time of initiation, that is called Namdan, and that sound current is called Nam. क्योंकि वो ग्रंथों में नहीं है, अक्षरों में नहीं आता है, लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, वो गुरु अपने तवज्जो से और शब्द से शुद्ध को आत्मा को जोड़ता है। That Nam doesn't come or is not part of any holy scripture or Puranas or any other such books. It is only with the attention of the master that he connects the soul with that holy sound current. इसीलिए वो नाम लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, वो सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। That sound current is not uttered by the mouth and it cannot be written and it will never be destroyed. आत्मा के कानों से उसकी आवाज सुनी जाती है, आत्मा के आंखों से उसके प्रकाश को देखा जाता है, जिसको आत्मा के ये 2 अंग है, जिसको सुरत और निरत कहते हैं। That sound current can only be heard by the soul and it can only be seen by the soul. The 2 faculties of the soul which can see that sound current and which can hear that sound current are called Nirat and Surat. गुरु नानक ने भी कहा है, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घट आचे। वही शब्द जो 10वें दरवाजे में संस्कार दे रहा है, उसी से संत में जोड़। Nanak Sahib has also said that it is that holy sound current which is there in every cell. It is there in this earth. It has created the skies and it has created everything that we see, and it is resonating at the eye center. तो इसीलिए संतों ने नाम की बड़ी महिमा गाई है, और नाम अनुभव के द्वारा जाना जाता है, मन और बुद्धि के द्वारा उसे नहीं समझ सकते। So that holy sound current cannot be understood or seen or felt by the mind or the intellect. It can only be understood by the soul through experience. क्योंकि जब हमारी रूह सिमट के ऊपर जाती है, जब आकाश के ऊपर जाती है, तो बुद्धि लय हो जाती है, जबान बंद हो जाता है, हम कैसे सुमरन करेंगे? तो उसी समय जो गुरु ने सबसे जोड़ा है, वो सब प्रकट होता है। When the soul withdraws from this body and gets skybound, the intellect and the mouth or our faculty to speak, and then the intellect itself, everything comes to an end, and only after that the soul gets skybound, and then with the grace of the master, the soul gets connected to that sound current. तो इसीलिए पलटू साहब उस नाम की महिमा, वही नाम की महिमा करते हैं कि वो नाम जो अपने अंदर में प्रकट कर देता है। गुरु ग्रंथ साहब ने उसको अमृत की परिभाषा दी है। So Paltu Sahib is referring to that Naam,
and he is saying that that naam is like nectar. कहते हो जो प्रकट कर लेता है वो आत्मा अमर हो जाता है और जुगन जुग उसका नाम भी रहता है, वो आत्मा अमर हो जाती है. He says that that soul which manifests that holy sound current, the soul gets immortal and his name remains for yugas. काल व्यापे नहीं अमर वो होएगा, काल व्यापे नहीं अमर वो होएगा, आदि और अंत वो सदा जीवे. तो कहते हैं कि उस आत्मा को जिन्होंने उस नाम का अमृत पान किया है, नाम को अपने अंदर प्रकट कर दिया है, वो जुगन जुग जीवता, उसका नाम अमर हो जाता है. आत्मा अमर हो गए तो नाम अमर होता है. So he says that that soul or jiva which manifests that holy sound current, the soul will become immortal. The name of that soul, the name of that jiva also becomes immortal and is remembered for juga to juga, for many years. कहते हैं ऐसे हम कितने अच्छे काम कर लें, कितने परोपकार करें, कितना कुछ दान पुण्य करें, लेकिन नाम थोड़े दिन के लिए होता है. लेकिन जो भक्ति करके जाते हैं उनका आत्मा भी अमर हो जाती है, नाम भी अमर हो जाता है. When we do other good deeds here, like we do donations or we do other good things, the name gets famous and one remembers, but it is only for a limited time. After that the world forgets the person. But those who manifest the holy sound current, their name is immortalized. तो इसीलिए कहते हैं कि वो नाम कभी नाश नहीं होता है और आत्मा भी जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाती है. काल महाकाल उसके नजदीक नहीं आते. So when that is manifested, the soul becomes immortal and it gets free from this life and death, and even Kal and Mahakal, they cannot come close to that soul. इसीलिए यमदूत भी नहीं आ सकते. जब काल ही नहीं आ सकता तो यमदूत कैसे आएंगे? और इसलिए गुरु को ही लाइफ टाइम में आना पड़ता है. And because Kal himself cannot come, there is no question of the angels of death coming to fetch that soul at the time of death. Therefore, the master has to come himself to fetch that soul. गुरु नानक के समय में पहला प्रचार था तो लोगों को संत मत की उतनी जानकारी नहीं थी. घर वाले लोग नाम लेते तो जबरदस्ती अपने बुजुर्गों को भी नाम दिला देते थे, जबकि उनको नाम लेने की कोई इच्छा नहीं होती. When Guru Nanak Sahib started giving initiation, the teachings were new and people were not very aware of the teachings of Sant Mat. So when someone got initiated in a family, he would forcefully make his or her parents also take initiation, or others in the family to take initiation. तो कहते इस तरह से एक बुजुर्ग को घर वालों ने भी नाम दिला दिया और उन्होंने उसको अच्छी तरह से समझाया नहीं. वो भी रात दिन दुनियावी चिंतन में मोह माया में लगा था, कभी भजन सुमरन नहीं किया. So like that, there was this old man who was also initiated forcefully in the family, and though he did not understand the teachings and he did not understand the path, and he went about his normal worldly ways. और इस तरह से खाना पीना नहीं छोड़ा, शराब पीना नहीं छोड़ा और उसके मन मलिन थे और मलिन होने से गुरु आए नहीं और यमदूत अपना जीव है बोल के ले जाके कुंभी नरक में डाल दिया. So, and he continued eating non-vegetarian food, drinking alcohol, and doing all kinds of bad deeds. Now, as a result, the burden of karmas was very heavy on him, and at the time of death, the master did not come to take him, and instead the angels of death came, and because of his bad deeds, they put him in the hell,
in a particular hell called Kumbhi Narak. कुंभी नरक में डाल दिया, जो सबसे खराब नरक होता है। गंदगी सड़ते रहती है, उबलते रहती है, उसी में डाल देते हैं। दुर्गंधी भरी होती है, जब इतना मुंह से ऊपर उठाता है तो डंडे मारते हैं उनको कि डूबे जाए। बहुत बुरा नरक है कुंभी नरक। Kumbhi Narak is is one of the worst hells, worst forms of hell, and it is filled with filth and stench. It stinks, and the dirt is boiling, and the soul is put into that filth. And when the soul in that astral body tries to breathe, it is beaten again and pushed back into that filth. तो इस तरह से वो कुंभी नरक में ऊपर नीचे कर रहा था। कभी सपने में भी सुमरन नहीं किया था, किंतु दुख में सुमरन याद आवे। क्योंकि अगर सुमरन हम करते रहते हैं तो ऐसे तकलीफ में सुमरन ऑटोमेटिक याद आता है। So this soul was also being tortured there in the hell, and it was also going up and down in that filth. But despite being in so much suffering, it did not remember Simran. Normally when we do a little bit of Simran also, when we face some kind of difficulty like this, the Simran starts automatically. But because that soul had never done such Simran, it did not remember to do that. सुमरन अगर करता तो गुरु हाजिर हो जाता, वो मुक्त हो जाता। लेकिन सुमरन जिसने किया ही नहीं जिंदगी में, तो सुमरन याद कैसे आवे? और वो बेचारा उसी में डूबता, ऊपर उठते रहा। तो नारद की सवारी जो ऐसी पहुंची नरकों में देखा, नारद को आश्चर्य हुआ कि संत कहते हैं कि भला बुरा जो गुरु भगत कहो नरक में जाए, कि संतों का जीव कितना भी बुरा हो नरकों में नहीं जाता है, और ये नरक में कैसे आ गया? So, if he had done some Simran, then he would have remembered, but he had never done that Simran. So he was suffering like that in hell. And if he would do Simran, then his master would surely come there. But he continued to suffer there. Now meanwhile, Narad Muni, he was passing by, and he saw that there is this initiate of a master who is in hell, and it is said that however bad an initiate is, he never goes in hell. So how is it that this initiate of Guru Nanak is in this hell and suffering like this? और उन्होंने अंदर में गुरु नानक को सूचना दिया कि महाराज आपका एक जीव कुंभी नरक में छटपटा रहा है। So he informed Guru Nanak Sahib within that one of your soul is suffering like this in hell. तो गुरु नानक आंख बंद करके देखे सच बात है, तो तुरंत वहां पहुंच गए। तो धर्मराज उनको अंदर जाने से मना करता है। So Guru Nanak Sahib immediately reached there, and when he reached the doors of hell, the Lord of Judgment immediately stopped him. तो कहते नहीं, मुझे देखना है नरक का जो व्यवस्था है कैसा है वो देखना है। कहते नहीं महाराज, आप कृपा करो, आप अंदर मत जाओ। So the Lord of Judgment told him, he requested not that Guru Nanak Sahib not enter hell, but Guru Nanak Sahib said, I want to see the arrangement inside, and therefore I have to go in. लेकिन नहीं छोड़ता है तो गुरु नानक कहते हैं कि हमारे जीव को कुंभी नरक में कैसे लेके आए? जहाँ मेरा जीव है मैं जा सकता हूँ, और चले गए अंदर। So the Lord of Judgment was requesting him not to enter, but then Guru Nanak Sahib said that you have one of my disciples, and how come you have put him in the Kumbhi Narak? So wherever my disciple is there, I can go. And then he went inside. तो धर्मराज ने देखा गलती से कोई जीव आ गया है, वो कहते हैं महाराज हम छोड़ देते हैं, आप मत जाओ। So the Lord of Judgment
also saw that yes, indeed, it was his disciple that had been brought in by mistake. So he told him that I will immediately release him. You please don't go inside. लेकिन गुरु नानक नहीं रुके, सीधा चले गए और जाके कुंभी नरक खोल रहा था, उसने अपना दाहिना अंगूठा स्पर्श किया, नरक शांत हो गया और वो आदमी को सुमरन याद आ गया. So Guru Nanak Sahib said, no, I will go and get him myself. And he went in, and then he placed his right toe in the Kumbhi Narak. And when he placed it, that soul got released. कहते हैं कि वो सुमरन याद आने से वो सुमरन करने लगा, उसका सुन के दूसरा, दूसरा सुन के तीसरा, अभी जो भी सुमरन करते हैं सब मुक्त होते जाते हैं. So immediately upon his toe being immersed in that hell, his disciple remembered the Simran, and he started repeating that Simran loudly. And when he did the Simran, he got released. And seeing him, the others also started doing Simran. And whoever was doing Simran was getting released. तो सारा नरक खाली हो गया. सबसे धर्मराज जी हिदायत दिया अपने शिष्यों को कि कभी भूल से भी संतों को जीव को नरक में नहीं मत लाओ. And that way, everybody in the hell, everybody got released. And the Lord of Judgment thereafter instructed that nobody by mistake also should bring any disciple of the masters in hell. सबसे फिर वो जीवों को वो लोग पास अभी आना छोड़ दिया और उनके लिए गुरु को ही आना पड़ता है. Thereafter, the angels of death never come near also, initiate. And therefore, the masters have to come themselves to fetch the soul of that initiate. तो वही आप कहते हैं जिन्होंने उस नाम रूपी अमृत का पान किया वो अमर हो गए, उनका नाम भी अमर हो गया. So Pattu Sahib says that those who have got connected to the holy sound current, they have become the soul has become immortal, and their name is also immortalized. संत जन अमर है उसी हरि नाम से, संत जन अमर है उसी हरि नाम से, उसी हरि नाम पर चित्त देवे. तो कहते हैं कि संत उसी हरि नाम का अमृत पी के वो अमर हैं, क्योंकि संतों ने देखा कि भक्ति ही एक मुक्ति का साधन है और संतों ने आगा पीछा नहीं देखा, भक्ति के समुद्र में डूब पड़े. So the saints, they have seen that this is the only way of salvation, that getting connected to the sound current is the only way of salvation. Devotion is the only way of salvation. And they have taken a plunge in the ocean of devotion. They have not bothered to see back and forth on this. They have simply taken the plunge in the ocean of devotion. उन्होंने नाम लिया, भरोसा किया, गुरु के ऊपर भरोसा किया, नाम पे भरोसा किया और गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के गुरु को खुश करके अंदर प्रकट किया. So when they have taken the initiation from the master, they have had full faith in the master. They have faith in Naam, and steadfastly they have embarked on this path and manifested the holy sound current. जो लोग नाम लेके और बाहर बैठे रहे, कभी 2.5-3 घंटे की बैठक नहीं बनाई, गुरु का हुक्म नहीं माना और जैसे के तैसे ही पड़े रह गए. And those who took initiation but sat outside, they did not venture to go in, they did not do their meditation for 2.5 hours daily. They have continued to remain outside. They have not been able to manifest that holy sound current. क्योंकि संत मत करने का विषय नहीं है, करने का विषय है. इसमें महात्माओं ने रात दिन जागा, रोया मालिक के लिए, गुरु के लिए, तब जाके वो गुरु उनके अंदर प्रकट हुए.
The Sanskrit is not a path of talking, it is a path of doing. So only those who have done that meditation, they have cried for their master, they have stayed awake in the nights and doing their meditation. Only they have been able to go within and manifest their master and the holy sound current. जब तक हमें संस्कृत की जानकारी नहीं है तब तक पढ़ना पढ़ाना कोई बुरा नहीं है। पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, जानकारी हासिल करो। लेकिन जब जानकारी हो जाती है तो आप पढ़ना पढ़ाना किताब बगल में रख दो और भजन सुमरन करो। So till the time that we haven't had initiation, it is a good thing to read and understand the path and do our reading. But once you have been initiated, you have got this Simran, then just get connected with your bhajan Simran and don't waste your time doing other things. जानकारी के लिए पढ़ना बुरा बात नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी पठन पाठन में लगते रहना बुरा ही है, क्योंकि जब तक आप साधन रूप नहीं बनोगे आपको गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। Reading is not reading for knowledge is not a bad thing, but if you spend your whole life trying to just gain knowledge and just do reading, then it's a waste. So once you have the master, you have to get into the mode of doing the exercise, of actually doing and not spending time in just collecting knowledge. हमें समय मिलता है 5 मिनट भी आंख बंद करके सुमरन करें, वो लाख दस से अच्छा है कि वो पढ़ने पढ़ाने। So when we have been initiated, even if we spend 5 minutes doing meditation, that is 100,000 times better than reading. तो हमें करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, साधन का रूप होना चाहिए और बाकी छोड़ करके साधन रूप बनेंगे तो गुरु की कृपा जरूर मिलेगी। Therefore, we have to focus on doing the exercise of meditation. We have to actually do the meditations, and when we do that, then we will get the grace of the master also. संत मत में विश्वास और प्रेम प्यार लेके भक्ति में लगना एक मालिक से मिलने का रास्ता है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है और प्रेम प्यार भी गुरु के चरणों से नहीं है तो इसमें कामयाबी नहीं मिल पाती। So to embark on the path, we need to have faith in the master, and equally we need to have love and affection for the master. So both faith and love and affection are important for doing our devotion. दास पलटू कहे सुदारस छोड़ के, दास पलटू कहे सुदारस छोड़ के, भया अज्ञान तू छाछ लेवे। फिर हमें जागृत करते हैं, पलटू साहब कहते हैं कि आपके अंदर अमृत का कुंड रखा हुआ है, अंदर जाके नाम रूपी अमृत पीने के बजाय आप छाछ ले रहे। छाछ करते हैं जो दूध का मक्खन बनाते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं, आसार वस्तु, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। So Paltu Sahib says that there is a pond of nectar within you, and instead of drinking that nectar and enjoying that nectar, you are busy drinking sour buttermilk and you are wasting your time. कहते हैं दुनिया का चिंता और दुनिया का आशा और रात दिन दुनिया से प्रेम प्यार होता है, एक छाछ के जैसा ही है, उसमें ताकत कुछ नहीं है, खाली पेट थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। So our love for this world and all our relationships and our possessions, this is like drinking buttermilk. It has no strength, and it will only give you momentary pleasure, just cool you down momentarily. But otherwise, there is nothing, no long-term benefit in this. तो इसलिए महात्मा कहते हैं भाई वो अमृत
जो अमृत आपके अंदर परमात्मा ने गुरु ने रखा है वो अमृत पियो और दुनिया का सामान अब दुनिया से अपने प्रेम प्यार को हटा लो, क्योंकि दुनिया झूठी है, नाशवान है, हमारा संबंध चाहती है। So he says that instead drink that holy nectar which is there within you, and that way you will get some you will get benefit from there. Get your attention and this love and affection which you have for the world outside to be focused inward towards your master and towards Nam, and you will get some long benefit. क्योंकि जिस दुनिया को आज हम सच माने बैठे हैं वो दुनिया एक दिन हमारा साथ छोड़ देती है, उस समय हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने उससे प्रेम प्यार किया होता है। When we are spending our entire life in the love of this world and all our relationships, and at the time of death we realize that all of this is going to be left behind, and when that realization comes upon us, we become very disheartened, we become very sad. तो इसीलिए कहते हैं कि वो समय तक हम इसको प्रेम प्यार करके उस समय दुखी होने के बजाय क्यों नहीं धीरे धीरे सुमरन भजन करके पहले ही से छोड़े, कि जैसे अंत समय में हमें तकलीफ ना हो। So instead of breaking that sorrow into us at the time of death, and this realization coming at the time of death, why don't you instead during your lifetime only get engaged in your meditation practices and gradually start leaving that love and affection which you have for this world, so that at the time of death it becomes very easy for you to leave all of this and go with it. अगर रोज घंटा हम सुमरन भजन करेंगे श्रद्धा से, तो गुरु हमें एक दिन दो दिन पहले अंदर दर्शन देके सूचना दे देगा और उसी दिन से सत्य प्रकाश प्रकट कर देता है और बड़े आराम से हम हंसते हुए जाते हैं। If we do our meditation for an hour and we have love and affection for the master, then at a day or so before the death, the master will come within and he will tell us of the time of death, and he will manifest the holy sound current and light within, so that becomes very easy for us to pass away. अगर हम भजन सुमरन नहीं करते हैं तो हमारा प्रारब्ध कर्म तो पहले का ही है जिसके ऊपर शरीर है, और दूसरा क्रियामान कर्म भी ऐसे रह जाता है, क्योंकि जो क्रियामान कर्म भजन करने से घटना था हमने भजन नहीं किया तो क्रियामान भी ऐसे ही रह जाता है, फिर उसको लास्ट टाइम में बीमारी के रूप में हिसाब देना पड़ता है। We anyway have the prarabdha karmas, our past deeds, which we have to pay for in this life, and we have to redeem those before the time of death. If we do not do our meditation regularly, then we are also building up our kriyaman karmas, the karmas that we have incurred in this life, and that account also increases, and it becomes a very big account to settle at the time of death. So therefore one has to then undergo sufferings at the time of death to redeem these deeds. इसीलिए संत सलाह देते हैं कि भाई छाछ पीना छोड़ो और अमृत पीने की कोशिश करो, रोज रोज भजन सुमरन में बैठो। Therefore Pattu Sahib says that stop wasting your time drinking buttermilk, instead try to drink that holy nectar, sit for meditations every day. दास पलटू कहे सुदारस छोड़ के बया ज्ञान तू छाछ लेवे, राख परवाह तू एक निज नाम की, राख परवाह तू एक निज नाम की, कनक मैदान में बांध टाटी। तो वही कहते हैं कि एक नाम से प्रेम प्यार कर लो।
और ये दुनिया छुट्टी है, नाशवान है। हमारा इसका संबंध 4 दिन का शरीर से है, कर्मों से है, आत्मा से नहीं है। So he says that you have your love and affection for the Naam. You focus steadfastly on Naam, and this world where we are outwardly focused, it is only connected to our body, it is not connected to the soul, and hence it is temporary. So don't waste your time around that. तो कहते हैं दुनिया में एक छोटा सा झोपड़ी बना लो मालिक के भजन बंदी के लिए, और 2 रोटी की व्यवस्था कर लो, भजन सुमरन करो। ये दुनिया छुट्टी है, नाशवान है। हम कितना भी इसको जमा कर लेंगे, अंत समय कुछ भी साथ नहीं जाना। So he says that you make a hutment and have enough space to do your meditation and eat a couple of rotis and just to continue with your sustenance and spend time in doing the devotion of God Almighty. Every other possession that we spend our life building, all that has to be left behind, and it is of no consequential value. मीर उमराव दिन 4 के पाहुना, मीर उमराव दिन 4 के पाहुना, छोड़ घर माही दौलत हाथी। तो वही आप पटुता की सलाह देते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया से आए, करोड़पति लखपति भी आए, जिन्होंने महल के ऊपर महल, बड़ा बड़ा बंगला बनाया, राजमहल बनाया, लेकिन कहते हैं सब छोड़ छाड़ के गए, कुछ साथ नहीं चले जा सके। So he says that there have been so many kings and nobles, they have with their wealth created palaces, they have built floors upon floors, and they have had several possessions, but none of them have been able to take anything with them. जो रात दिन अहंकार के नशे में डूबते, जिनके दरवाजे पे जो है कि हाथी, घोड़े और बड़े बड़े आतिशबाजियां चलती थी, लोग अहंकार के नशे में इस तरह से बोले थे कि हम ये ही रहेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। Those people were blinded in the ego, where they were surrounded by elephants and horsemen, and they had fireworks at their doorstep, and they saw this and they felt that this is going to be perpetual, and they were lost in their ego. कहते हैं कि लेकिन वो काल का कानून है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। But the rule of the law of nature is that we have come empty-handed in this world and we are going to leave empty-handed. तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि एक झोपड़ी बना लो, रात दिन भजन करो, माने जो धन आपके साथ जाएगा वो धन इकट्ठा करो, वो धन कौन सा धन है, वो नाम रूपी धन है। So he says that make a simple dwelling and focus on your meditation, build that wealth which is going to go with you and which is not temporary and which will not have to be left behind here. क्योंकि जब जीव पैदा होता है ना कुछ लेके आता है ना कुछ लेके जाता है, जो जो उसके प्रारब्ध में प्रारब्ध के अपने अपने प्रारब्ध कर्मानुसार यहाँ मिलता है, लेकिन वो चीजें काल और माया की होती है। So everyone gets their possessions and wealth in this world according to their prarabdha karmas, their past deeds. So each one gets according to his own deeds, and whatever comes our way has to be then left back here, because those material things belong to Kala and Maya, and one cannot take them along. यहाँ अपना कुछ नहीं है, अगर अपना कोई हितैषी है तो एक सद्गुरु है और दूसरा वो परमात्मा है। There is no other well-wisher here in this world. If there is a well-wisher, it is Sadguru and God Almighty. क्योंकि गुरु हमसे कोई आशा बगैर हमें उपदेश नाम डाल देता है,
हमारे बड़े बड़े कर्मों को अपने ऊपर लेके काल को हिसाब देता है और अंत समय मरते समय अंदर हाजिर होके दर्शन देके उसको ऊपर के मंडल में ले जाके वासा देता है. The master helps us selflessly, and he assumes the heavy burden of karmas that we have, which require us to go to hell to redeem. He assumes those karmas and he redeems those karmas upon himself. And then after that also at the time of death he comes to fetch us. He is there for us at the time of death, which is a difficult time, and to take us further. और ऊपर के मंडल में भी वो साथ रहता है. तो करते जो यहाँ मरने के बाद वहाँ साथ निभाए वो अपना है. Thereafter he also helps us all the way back, and he is always there with us. So the master says that he is ours who helps us in this world and beyond. जो यही अपना साथ छोड़ देता है तो आगे हम जब यहाँ से जाने लगते हैं हमारे साथ नहीं दे सकते तो वो कैसे अपने हो सकते हैं. And therefore those who are not able to help us beyond death, who are leaving us at the time of death, then how can we say that they are our true well-wishers? तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि बहुत करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिला है और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिला है. अब जो गुरु कहता है उस पर अमल करो. So after millions of lives, our good deeds have given us this human life, and with the grace of God Almighty we have the company of the masters. So therefore we have to make the most of it and follow the instructions of the masters. पकड़ ले शब्द जिन तो ही पैदा किया, पकड़ ले शब्द जिन तो ही पैदा किया, और सब होएगे खाक माटी. तो वही पट्टो साहब जी कहते हैं वो शब्द को धारण करो, शब्द को पकड़ो जो तुम्हारे 10वें दरवाजे में जो साथ दे रहा है उसी ने 9 महीने तुम्हारी परवरिश किया है, तुम्हारी संभाल किया है. So Bantu Sahib says that have that love and affection for the holy sound current, because it is that sound current which has nourished you when you were in the womb for 9 months. तो कहते हैं वो शब्द 9 महीने जब मां के गर्भ में वो हमारा पालन करता है, शब्दित है. वहाँ पे कौन है हमारा अपना, कहते वो शब्दी है. और फिर हमें दुनिया में भेजने के पहले यहाँ परिवार, कुटुंब परिवार, धन संपत्ति और खेती बाड़ी सारी व्यवस्था करके भेजता है. तो वो कितना दयाल है. So that sound current has been taking care of the soul in the womb. Who else is there in the womb to help and protect that soul? And outside also, for the comfort of the soul, it has taken care of having all the relationships created here and all the other possessions that will come by for that soul and for the comfort of that soul. All that is taken care of by that holy sound current. So who else is there who loves you so much and who is attending to you so much? इसलिए अपने कौन है, एक तो गुरु है जो यहाँ नामदान देके आत्मा का पल्ला पकड़ता है और परमात्मा का दर्शन कराने तक छोड़ता नहीं. और दूसरा वो परमात्मा है जो 9 महीने माँ के गर्भ में आपका हमारा पालन किया होता है. Therefore, it is only these two who are the true well-wishers. It is Sadguru who holds on to your finger here and helps you through death and takes you back all the way at each level to God Almighty, and He places you in the lap of God Almighty. And the second is God Almighty Himself, who has nourished you, who has taken care of you, and who is waiting for you.
अगर उससे प्रेम प्यार कर लो और सत्य को अपने अंदर प्रकट कर लो तो आपको मानव शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाएगा और आपकी आत्मा अमर हो जाएगी। So therefore you do that effort to manifest that holy sound current within and do work towards the true purpose for which you have been given this life. दास पलटू कहे देख संसार गति, दास पलटू कहे देख संसार गति, बिना निज नाम नहीं कोई साथी। तो वही पलटू साहब भी कहते हैं कि मैंने संसार की गति को देखा, संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वो राजा हो या भिखारी, सब दुखी। Paltu Sahib says that I have seen the ways of this world and I have observed the ways and I have seen that nobody is happy in this world, be it a king or be it a beggar, everyone is unhappy. कबीर साहब ने भी कहा है, तन दर सुखिया को न देखा, जो देखा तो दुखिया हो, उदय अस्तलो बात का तन सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते हैं जहाँ सूरज उगता है, जहाँ अस्त होता है, वहाँ से वहाँ तक हम ज्ञान की दृष्टि से देख के कहते हैं शरीरदारी दुनिया में कोई सुखी नहीं। Kabir Sahib also says that I, with my wisdom, I have seen from where the sun rises to where the sun sets, every being which has a body is unhappy. There is no one who is happy who has a body in this world. तो कहते हैं क्यों? क्योंकि दो तरह के कर्म करके जीव को मानव शरीर मिलता है, एक अच्छा बुरा, पाप और पुण्य। खाली पाप ही पाप किए तो नरकों में होते हैं, खाली पुण्य किए होते तो स्वर्गों में होते हैं। पाप पुण्य के मिश्रण से मानव शरीर मिलता है। One gets this human body with a mix of both good and bad karmas. If one has only bad karmas, then he would be in hell, and if one has only good karmas, he would be in heaven. But it's a mix of both good and bad karmas that are given when one has to take this life form of a human being. तो माया पिछले कर्मों को पौना भाग और कुछ संचित में से चाराने भाग मिला के ही एक प्रारब्ध तैयार करती है और बाद में उसी प्रारब्ध के अनुसार हमें शरीर मिलता है और फिर इस दुनिया में भेजा जाता है। So Maya, she constructs these karmas, and when she takes about 75% of karmas from the previous life and about 25% from the store of karmas of sanchit that are there, and then with a mix of these karmas, it prepares the pralab for the human. तो कहते हैं अच्छा और बुरा, ये दो तरह के कर्म होने से वो कर्म के चक्कर चलते रहते हैं और सुख दुख हमारी जिंदगी में आते रहते हैं। And because it is a mix of good and bad karmas, there is this continuous cycle of good happiness and sorrow that keeps happening in everyone's life. तो इसीलिए महात्मा कहते हैं दुनिया में कोई सुखी नहीं। आप जहाँ सूर्योदय होता है वहाँ से सूर्यास्त तक देखो, सब दुखी है। Therefore, the masters say that no one is happy in this world. When one sees from where the sun rises to where the sun sets, everyone is unhappy. इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु नानक जी ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। नानक जी कहते हैं कि सारा संसार दुखी है, वही सुखी है जिन्होंने नाम को अपना जीवन आधार बनाया। बाकी जिन्होंने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया वो सब दुखी है, वो चाहे राजा हो या भिखारी। Guru Nanak Sahib says that everyone who has taken the support of this world is unhappy, and only those who have taken the support of Naam, they are the only people who are happy. इसलिए महात्मा कहते हैं कि अपने ही कर्मों के भुगतान के लिए जीव
कभी दुखी होता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, बीमारी आती है, ये अपनी कर्म है। लेकिन हम अनजान वसात गुरु को दोष लगाते हैं कि हम पुराने सत्संगी हैं और गुरु ने हमारे इस कर्म को क्यों नहीं दूर किया। तो गुरु सब कर्म दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये काल और माया की नगरी है, यहाँ उसका अधिकार चलता है। और जो कर्म हमने किया वो गुरु से पूछ के नहीं किया किसी ने, सब अपने मन के दायरे में किया है, तो उसका हिसाब तो उनको देना ही पड़ेगा, वो चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो। So this suffering that everyone is going through is only as a result of his or her own deeds of the previous lives. It is not anyone else's suffering that is cast upon that individual. And that is how they have got these prarabdha karmas, that is how they have got these fate deeds which they are redeeming. And when we go through these good and bad deeds, and we sometimes have to suffer and we have that sorrow, we start blaming our master and we say that we are old satsangis and why did we have to go through this suffering? Could the master not redeem this suffering for us, or could he not ease this up for us? But the masters cannot interfere in your prarabdha karmas. They cannot interfere and change these, because these have been these are the building bricks of your current life, and they have been given to you. And Kal and Maya, in whose world you are, they have done this. So this is the word and rule of Kal and Maya, and the masters do not interfere in this. Also, when you have done these karmas for which you are suffering today, you have not gone and asked the masters whether you could do these karmas. You did these karmas on your own, and you have to pay for them on your own. So we should not indulge in blaming our masters and telling them to rid our problems or rid our sorrow, because that is our own doing. Whether you are a satsangi or a non-satsangi, for worldly people and for satsangis, everyone has to go through the prarabdha karmas according to what they have themselves set for themselves earlier. गुरु ने आपकी आत्मा को मुक्त करने की जवाबदारी दी है, परमात्मा से मिलाने की जवाबदारी दी है। आपके कर्मों का भुगतान कराने के लिए गुरु ने जवाबदारी नहीं दिया है। वो कर्म जिसका है वो उसी को भोगना ही पड़ता है। लेकिन हम सोचते हैं कि शायद नाम लेने से गुरु ही सब भोगेगा, तो ये गलत बात है। कभी ऐसी धारणा नहीं लेनी चाहिए। The masters have, by giving you initiation, they have only assumed the responsibility of taking you back to your true home and taking you back to God Almighty. But we should not mistake this to believe that now Guru is going to pay for everything that I have done and go through, he is going to take all our suffering and he is going to just let us have a happy life. So that is not a responsibility that the masters have assumed. The illness, she remembers God, but when she has to do meditation, she doesn't remember God. तो कहते हैं कि लोग अपने भले की कुछ ऐसी सी बातें पकड़ तो जरूर लेते हैं, लेकिन जो गुरु कहते हैं उस बात को नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि भले को वो भी कहते हैं कि रोज 2.5 घंटा भजन करो और नाम से गुरु से प्रेम व्यार करो, तो वो तो करते नहीं। हम दुनिया के प्रेम में रह जाते हैं और कैसे कैसे कर्म बढ़ा लेते हैं और चाहते हैं कि गुरु कृपा करे तो कैसे करेगा। When the masters talk to us, we do very selective listening. We only listen to those things which suit us, and therefore we pick such things that he is going to take our karmas and he is going to reduce the load of karmas. But when it comes to serious things that the master is trying to convey to us, we turn a deaf ear. We don't listen that we have to do meditation every day. We never listen to that, and that somehow never registers. कहते हैं कि इस तरह से गुरु जरूर करता है। गुरु क्या करता है कि बड़े कर्म जो आपको नरकों में ले जाने का जैसा आपके भाग्य में रहता है प्रारब्ध में, उसको दूर कर देता है। लेकिन छोटे मोटे कर्म का आपको ही हिसाब देके जाना पड़ता है। The masters definitely assume a lot of your
deeds, a lot of your bad deeds are assumed by the master. And these are very large sins that are committed, which require you to go and pay for these in hell. So all these very large deeds which you will not be able to redeem, those are assumed by the master. So it's not that the master does not take your deeds, he indeed does it, but then he expects that all these small kind of karmas that one goes through, that should be taken care of by the soul itself. दास पलटू कहे देख संसार गति, दास पलटू कहे देख संसार गति, बिना निज नाम नहीं कोई साथी। तो इसीलिए लास्ट में पढ़ते जी क्या कहते हैं कि भाई देखो संसार की गति, संसार सब बहा जा रहा है, यही अपना कर्म है सोच के रात दिन झूठ लबाड़ चोरी चमारी और बुरे कर्मों में अपने कर्म को बढ़ाते जा रहा है, उसे इसका ज्ञान नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। So Paltu Sahib says in the end that look at the flow of humanity. It is flowing and everyone is lost in this flow. Everyone is going around with all worldly thoughts and flowing for all for all materiality and everything, and is building up their own karmas, and everyone is not aware of how these karmas are going to have to be repaid. They are just building up their account of karmas in this flow. तो इसीलिए कहते हैं आपको तो नाम मिला, गुरु मिला, सत्संग में सारी जानकारी दी जाती है, आप जो है कुछ ऐसे वैसे कर्मों से बचना चाहिए और भजन सुमरन में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए। So now that you have been initiated and you have been explained by the masters, you should not indulge in these kind of karmas. You should abstain and keep yourself aloof of such karmas, and instead do your meditations and spend time in your devotion. क्योंकि आपको अगर कोई सहारा है तो एक गुरु है, दूसरा परमात्मा, क्योंकि आत्मा का वही पिता है और वही एक सहारा है। So therefore you have the master and you have the support of the master and God Almighty. तो इसलिए चाहिए कि जो भी संत महात्मा हमें हिदायत देते हैं उस पर अमल करें, रोज रोज सत्संग सुने और रोज रोज भजन सुमरन बैठने की कोशिश करें। यहाँ पे हम आए हैं, जो भी हम आदत डाल रहे हैं आपको, ऐसे घर पे भी जाके हम टाइम टेबल लिख के रोज रोज बैठने की आदत डालें। So whatever is being explained to you, we should try to internalize this. We should try to bring this about in our lives, and you should try to go home and sit for 2.5 hours of meditation. Whatever practices we are doing here in this program, you should try to follow the same practice when you go back and sit for meditation at home. Make it a routine and give it a priority in everything else that you are doing, to spend time doing your devotion. जिस तरह से आप रोज रोज बैठेंगे, रोज रोज सत्संग सुनेंगे, गुरु खुश होएगा और उनकी दया का हाथ आपके सिर पे आ जाएगा, आप यहाँ भी सुखी रहेंगे और मरने के बाद में भी सुखी रहेंगे। So when you do this, you spend time of 2.5 hours in your meditation. You should also listen to satsang every day. And when you do this, your master, your guru will also be happy, and his hand of grace will also be upon you. And that will make your life comfortable not only here, but also it will help you beyond this life. दास पलटू कहे देख संसार गति, दास पलटू कहे देख संसार गति, बिना निज नाम नहीं कोई साथी।